Good morning. Good morning, everyone. Welcome, welcome, welcome to your wonderful day. A new beginning. Today is the 12th, and today is a day which is very, very beautiful because 1 plus 2 is equal to 3. And as I always say, and you'll hear with me throughout these one-to-one days, that 3 is a number of creation. So, hence, we are here on this magical date with some new beginning. Firstly, a hearty thanks to each one of you. You've come here at 5 o'clock on a Sunday morning. Now, how many ever you are here shows a lot about your commitment and integrity. So thank you for being in that integrity. So a lot of questions will be coming in as to why we are here, what is the agenda, what is Bond One-to-One for Life. So yes, everything will be sorted, everything will be spoken about. And I have one thing to tell you. Today is all about numbers. Today is about the date I've just talked about, and I'll just take you through my magical journey, why we're here, how we are here, and what is Bond One-to-One all about and how it began. So Rahul sir, may I request you to please showcase the first presentation of the day where everyone can know a lot about Bond One-to-One and our world within ourselves. So again, a big thank you to all of you. The reason why you're here is not something which is, which is comprehensible. You just know that it's here because you are here because you are meant to be here. So take it as a guidance. I want to present amidst you all the power of dreams. He truly, as the word says, we are adding power to our dreams. We all have come in this human life and we're full of dreams and ideas and creativity. So we're adding power. And why we are meeting in the morning at 5 o'clock, if you see the sun in the power, it's because the sun has a lot to do with our energy. As the sun rises, so does our energy. So if somebody has heard of Brahma Muhurat, the Brahma Muhurat falls within our 1 hour, 20 minute session in the mornings. We will talk about Brahma Muhurat a lot hereafter. But meanwhile, just get that mornings are very, very beautiful. For those who are seeing us virtually and are not logged in live right now, the energy exchange here is beautiful because I can see you, you can see me, and we can ask questions and we can deliberate. Nonetheless, both are empowering, whether you're doing it offline or online. Depends on your commitment. I believe in rituals. So that's why we are in this world of spirituality. It is not to do with religion at all. So don't confuse spirituality as religion. We are not talking about religion here. We're talking about life. So Bond One-to-One for Life is going to bond you with each other, with yourself, and the one-to-one numbers are also equal to one-to-one. So you will be on a one-to-one with yourself, and that's 100% a done deal. If you look at the logo, on the top, it says love. So if you say love, what is the definition of love? It says, let our virtues expand. So all the goodness in us, let that expand. Let us be channels of love. What does light mean? Living in God's heightened terror. So this is what light means. So love and light is the name of our transformation series 3. I was guided to do it. So, and you see a golden plate, it's a golden circle of life, which we are all going to revolve around. So without further ado, let's start and move on to the journey. The next page, please. So what is the entire concept? Let me run that through you. And so the approximate timeline for the content. Sir, this is the other presentation. I'd asked for the angel numbers presentation, please. This one is taking them through it's a second presentation. Is that okay if you can change it? Thank you.
So angel numbers 1 to 1 are the angel numbers. And before that, I think it's a Q. I can see Shweta here, Kanudia. So Shweta Kanudia, if you can spot her on the gallery view. So we are very new to this world of Zoom on our own. So far, 5th September is when I began the journey, and this was with Shweta Kanudia. And very beautifully, she was hosting the entire Zoom sessions for us. We were using Sunbeam Mughal Sarai Varanasi's Zoom platform. And today is the first day that we are on our own. So, yes, we will have some glitches, and we are okay with that. So, Shweta, who is she? I met her in my World of Ladies Circle. It's an organization, a global organization. And as a national president of the organization, I traveled to Varanasi where I met her. We connected, we bonded as members. But yeah, that was it. Just there was some fondness, which would exchange WhatsApp messages until we met each other in Rahul Jain's classes. He's a business coach for both of us, and he's helped us really empower our lives. That's when Shweta asked me to empower her students for an hour. She usually brings in some motivational speakers for her students. Then I told her, as let's do an hour a day with Magic Book, and the love saga began. So thank you, Shweta. I was a certified coach because of Lady Circle, but I never knew that I'm going to join this world. And then I don't know how life unfolded. The evening sessions began where the entire world was allowed to come. And we had students from 7 continents. From where they came, we have no idea. Then the morning sessions were guided to be started. We began them on 12th of January. Successfully, we finished yesterday's second batch. And the testimonials are there on YouTube. They're also on our Facebook page. You can have a look at them just to know what's in store for you. I won't speak much, let the testimonials speak. And I can tell you, I don't even know anyone in the batches. I didn't know anyone in the batches, but now I do. So yeah, that's what the journey is all about. Uh, so yes, Rahul sir, I'm waiting for the presentation, the angel number that sent you, emailed you yesterday evening. If that is not there, you can start this with this and you can download the other one. I did check. So I had sent you one more. So anyways, please start the flow and you can download the angel numbers. I did check with you on the group yesterday as well, nonetheless. So yes, it's our first day. So we will have some, not this one, sir, please. This is much later. The angel numbers, it's called, just check your email. But nonetheless, please start the other one, which you showcased before. So angel numbers will probably, they want to show up a little later after you all know what the flow is all about. So it's okay. We'll go with that guidance and we'll start that journey. So Rahul sir, let's have that other presentation which you showcased. So I'm waiting for that other presentation. Yes, please. Thank you so much. And please download the other one from the mail. So next page, please. All right. So let's have a look at this beautiful thing. What is Born 1 to 1 for Life? So it was formed on the 5th of September 2020. Teachers' Day is when it took birth. The puzzle shape denotes that we all are a perfect fit. We fit wherever we want to because each one of us is whole and complete. And when we meet the others, also, it's an amalgamation, it's addition to our own extension. So let's get that very, very clear. Each one of us is complete with the rainbow colors of the universe. So the universe has multicolors, right? It's got all the colors in the universe. And so does this puzzle shape. It's got all the colors with your colors. This puzzle shapes looks like colorful crystals. So you see facets and triangles. Triangles are again believe are very, very beautiful because they have got three sides. And that's what if you look at diamonds, if you look at anything, any crystal, it's got three side facets. So this beautiful thing has 11 facets. If you can look, there are 11 diamonds here. Now, these 11 diamonds, which are highlighted, are our energy centers. So, all of us, all human beings, when we come on Mother Earth, we are bestowed with energy centers. These get activated in us as we progress in life. But in our journey of 1 to 1 days, it'll help us all as a Sangha, as an individual. We will find that our energy centers are getting enhanced, like opening up. Thereby, we'll be able to see love and light. So, a lot of us had probably mistrusted people. We always thought, okay, things are not going right in my life because we saw the darkness, because we saw there was no abundance. But now in this journey, we will keep progressing. A lot is going to come your way. So maybe something will be too much, but just understand whatever you can. So all us human beings have 7 chakras. And these chakras I will open up to you tomorrow. They're also in the colors of Vibgyor.
but we are all living in the lower dimension. Do you ever hear that people say Mother Earth पे इतना torture हो रहा है, Mother Earth is not able to, itna the atom bombs are being, the nuclear wars are happening. In the name of territories, like look at India, Pakistan, Indochina, so much is happening because we're all living in a lower dimension. So what is a dimension? It is a realm where we all live. But as we become the new human beings, we will have 11 activated chakras. About this entire theology, you will get to know in the first book, which will start on 16th. It's called The Shift. It's called the Unbelievable book. So, you will hear about in that, you will understand this science. So we are right now living in a lower dimension, ready to go in the higher dimension. So this is also what the logo is all about. The seven alphabets of Born One to One, they depict the seven different bodies. What do I mean by seven different bodies? Have you ever seen an image with aura? So if you see a human aura has seven layers, subtle to gross. Together we are an aura. And now our aura is also all about our beautiful body, which has always been, but we'll start seeing it much more. These seven layers will come in prominence, and you will be filled with newer love for life as you start discovering unconditional love for yourself and the oneness of your life. This is what this entire curriculum in a nutshell is all about. Hereafter, we start sharing our light. So a lot of us had constriction, we can't speak, we can't express, we feel stifled, we feel log baat nahi karne dete, hamari baat kaat dete hain. All of a sudden, when our chakras start opening up, we'll be able to share our light. And that light is very much within us. But it's just been overshadowed by some set beliefs of ours. So we'll make a shift in our beliefs. So we'll all start sharing our light. We'll shine bright, bright here, right now. So let's have the next page, sir. So believe me, it's going to be a beautiful journey. Now, these angel numbers, what is the symbolism of the number 121? The number 121 is comprised of the double number vibration, double number one. One has a beautiful vibration, it's doubled up, and the energies of number two is also in this number. Now, number one resonates with creativity and creation, manifestation and attainment, new beginnings, motivation, progress, self reliance, striving forward, pursuing goals, achievement, inspiration. It also resonates and relates to creating our own realities by our own thoughts, beliefs, and actions. One thing I can tell all one of us, each one of us is whole and complete. Each one of us is creative. Each one of us has our dreams. Each one of us has new beginnings. In fact, every morning there's a new beginning. Every night there's a new beginning. Morning has a beginning for a day, and night has a beginning for an evening. Night, which is why we are going to follow the circle of life, and together we will progress ourselves. Only we can help ourselves. These beautiful books and knowledge bank that will come your way will help you pursue your goals and take your own achievement, inspire you to create your own beliefs, your new thoughts, your new actions. So with the rituals, you will be having new actions, right? That's what number one is all about. Number two, this number is energies of balance. So if you look at tarazu system, you've got two sides. If you look at a couple, a man and a woman, Shiva and Shakti, two sides. This number is balancing us. This number is about our consciousness, our subconsciousness. A lot of terminology will come your way. You'll understand everything. Doesn't matter. This number is about healing. When you, with yourself, are ready in the world of healing, you will be healed with devotion for whatever you do, for grace. It carries the vibrations of duality, diplomacy, adaptability, partnership, relationships, sensitivity, and selflessness. So this number is all about that. It also resonates with most beautiful qualities of a human being called faith and trust. If you have faith, the world moves for you. If you have trust, the world supports you. If you mistrust, it means you're living in a world of lack of love. I will not say hate, I will say lack of love. When you follow the words faith and trust, in Hindi, we can call it Shraddha and Saburi. I'm a Sai believer. So my Sai says Shraddha and Saburi. That's faith and trust. And thereby you'll serve your divine life purpose, your soul mission. What is a soul? Have you ever heard of I mean, I'm sure all of us have heard, but for those who probably are not in this world at all, let me tell you two things.
We all have a spirit, right? We all know about that. Spirit, soul, right? Our soul has a purpose. We are wearing this body, these clothes as Prachi Agarwal in this life. But my soul has had many, 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 many lives before. So this soul has a mission. It has a purpose, जो हम इस life में आके भूल जाते हैं. And what is that purpose? To just see love, to just see light. When you see love and light, everything becomes a cakewalk. You can dance away to glory because all the doors will open up for you. Kuch compromise जैसे words, nothing will come your way. So what's going to happen in this beautiful journey of this one-to-one? This go-getting number one, when blended with a sensitive number two, it makes a number one-to-one, which is a very, very balanced number. So get that fact very clear that we're in here for some reason, for some purpose. Any questions so far? Any questions anyone has, please feel free to type so that I can answer you as and when I'm taking you through this journey. Rahul sir, is there another presentation after this, another page? Okay. So the angel number one-to-one, when we see the angel number one-to-one, it's a message to us. So now what will happen, those who will embark on this journey with me, आप लोग को one-to-one कहीं ना कहीं दिखता रहेगा. So what is it? It's a message. You'll be observing one-to-one. It's a message for us to stay positive and maintain faith and trust in our angels and the universal energies as our feelings, beliefs, and thoughts will manifest into our reality. So if we stay positive, if we embrace the attitude of positive, jo hoga hi hoga. Your Sangha together will come together and you will be here for a reason. So when you have faith and trust in our angels and all the universal energies are there, you'll start feeling very amazing. Your beliefs will change, your thoughts will change, and you'll be able to manifest into your reality. So agar aap pe koi bhi dreams hain, they'll all come true. So keep your focus on your desires. Keep your focus on your positive expectations. You must expect from life. It's very important to expect. It's very important to have good outcomes. And we will receive them all. And that's my promise to you when we are in this journey. So, what will we do? We should give, surrender any fears or doubts to our angels for transmutation and healing. So, yes, we have expectations, but we are seeing a small picture, right? So the creator, the universe's creator, आप उसको भगवान बोलो, खुदा बोलो, God बोलो, कोई भी नाम बोलो. You give him Buddha's name, Mahavir's name, you give him any name you want, any religion or any superior energy. When you surrender to him that, okay, this is my vision, this is what I'm seeing, but you know better what should unfold for me. When you surrender that, when you surrender and give your fears away, your doubts away, that's when you're healing and that's when reality is coming true. So, angel number one-to-one is a message from our angels to ensure that we put out to the universe is of a positive nature. We are asked to stay on a positive path and to use our natural skills, talents, abilities to their utmost for the benefit of ourselves and others. So, in this journey of one-to-one, it will not be about I, me, and am. You will grow into a person who's beyond yourself. You'll grow into a person who will be on such a beautiful, positive path. Your natural skills will come into place, your talents will come into your place, and you'll be having the abilities to benefit not only yourselves but others. That's why all those people who've come because of somebody's suggestion, more power to them. They are the reasons why you're here on this journey today, this morning, and you will be seeing love and light because of them. So, a big thank you to those ladies and those men. Number one-to-one also relates to the number four. 1 plus 2 plus 1 is equal to 4. And the angel number is also coming in here, which is all about cohesiveness. We'll talk more about that later. This content is available on this particular link. If anybody wants, I can share with them on the WhatsApp groups. You can have a look at them, you could read about it. So I did not know about these angels at all until 2016 when I went so as a president of National Lady Circle India, my theme was born one to one for life. So sorry, born one to one. That was it. And somebody told me you keep seeing number one to one because they're your angel numbers. So that is why I got in this journey. So a big thank you and shout to her because of her, I got to know about this world. So thank you, Rahul sir, for showcasing this book, this journal. I don't think there's another page. So how do we know what we're asking is for our good? Very beautiful question, Supriya. So we ask as per our knowledge bank.
We ask exactly how we want, and then we let it. That's why we surrender it, because this is what I think I need. This is what I think is good for me, but you know better what's good for me. So, we keep doing this every 15 days, we manifest, we keep harping on it, then we surrender. And 15 days is of letting go cycle. That's about monology. So if you've read the curriculum, you'll be able to understand that much more. Rahul, so in case you have the new, I think it's going to be nicer. If you don't have it, it's absolutely okay. We can move on to Ankvidya. So we do ask अपने बलबूते पे, अपने intelligence पे, and we let the universe unfold. That's what we are doing in our journey. So, okay, any questions so far? If anybody has questions, you can raise your hands and I can always answer them. If not, we are absolutely good to go. All right. So now I've introduced the symbolism of the one-to-one. Let's move on to our numerology cycle. So, sir, we can have the Ankh Vidya. It's absolutely all right. We can move on to that. The other presentations, we can send them on the groups. It's not a big deal. So, Rahul, sir, the Ankh Vidya coming up, numerology. Okay. It's all about numbers. So, what is about numbers? Let's understand. So, let's move on. So this presentation is from this beautiful healer therapist called Anjali Rajwani. She has done a program for all of us, and today we'll share the link. It's on YouTube also. It's a proper guided session, but I'm just going to do it in a nutshell. Anjali is a numerologist. She's a numerology counselor, numerology workshop facilitator. She's done that for us. She has been practicing many forms of healing, which includes crystal, tarot, angel, metaphor, access, REBT counseling, and many more. So thanks to Anjali that we're here this morning and learning the Ankh Vidya in a very nutshell. Let's move on. So what is numerology? So some of you will say, "Arey Prachi kya aaya? Astrology padni padegi, numerology padni padegi." No, not at all. It's going to give you an idea of what powers of number play will happen. So हम सबने शायद सुना होगा, अगर आप हिंदू हैं तो आपने 108 का बहुत सुना होगा, 108 times chant. These are laws of the universal. They're universal numbers. It's not Hinduism actually. It's a very sacred number. कैसे बना ये? So these numbers actually कहाँ से exist कर रहे हैं? जब civilization शुरू हुई थी ना, when the earth began, that's when different cultures started. धीरे cultures आए. शुरू में Adam Eve थे. उसके बाद धीरे धीरे cultures आने शुरू हुए. उसके बाद excellent system आया analysis का, जिससे हमें awareness हो जाती अपने बारे में. अब मैं ऐसी क्यों हूँ? मुझे मेरे अंक विद्या से मालूम पड़ेगा। आप वैसे क्यों हैं जैसे आप हैं, आपके पर्टिकुलर अंक विद्या से आपको मालूम पड़ेगा, जो आपको एक डायरेक्शन देगी लाइफ में। इट विल गिव यू अ ब्लूप्रिंट। हम एक घर बनाते हैं, उसके आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट बनाता है ना, फाउंडेशन बनाता है, कहाँ नींव है, कहाँ क्या है। दिस इज अ फाउंडेशन, बहुत सिंपल फाउंडेशन है। लेट्स मूव ऑन। मैं आपको गाइड करूंगी। पेपर पेन अगर है तो ग्रेट, नहीं तो मोबाइल फोन्स भी यूज कर सकते हैं आप टू कैलकुलेट। यस सर, लेट्स मूव ऑन। So numbers हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं? How do they affect us? Numbers are language that all mankind understands. हम सब समझते हैं. For example, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ, which is 0. फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ. मेरा बर्थ डेट 18th को है. मैं मई में पैदा हुई थी. मैं इस 1978 में पैदा हुई थी, फॉर एग्जाम्पल. या मेरे घर का नंबर ये है. नंबर नहीं है, या अभी किसी लेडीज को सामान खरीदना होता है या कुछ खरीदना होता है, प्रोडक्ट्स कुछ किसी को भी खरीदना होता है, बाय लेडीज. One TV or maybe a kilo of potatoes or maybe 5 kilos of tomatoes. हम numbers के साथ रोज काम करते हैं. अगर numbers नहीं हैं तो हमें पता ही नहीं चलता how to function. अब आज अगर मैंने आपको बोला 5 बजे आना है तो आप 5 बजे आए. There's a number 5. नहीं तो कैसे पता होता? कभी भी कोई भी आ जाता, right? So numbers, हम सब language understand करते हैं numbers की. Numbers का एक core concept होता है functioning के लिए. We all have, हम the minute हम धरती माँ पे पैदा होते हैं, हमारी एक एनर्जी फील्ड धरती की आ जाती है और वो भी नंबर हो जाती है. आप लोगों ने सुना होगा कि बर्थ का टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आप कैसे हैं डिटरमिन होता है. अब रीडर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको फंसा रहा है एस्ट्रोलॉजी में कि वाकई में आपकी वैल्यूज बता रहा है. जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी पत्री बनी थी बाय पंडित जी, हु इज नो लॉन्गर देयर. आई कैन टेल यू उसमें हर चीज लिखी हुई है अबाउट मी.
किस एज पे क्या होने वाला है, क्या मैं करने वाली हूँ, किस टाइप के घर में शादी होने वाली है, कैसे बच्चे, कैसी सर्जरीज, कैसा सब कुछ। इनफैक्ट आई लॉस्ट माय ब्रदर 2018। ऋषि के बारे में भी लिखा हुआ था कि भाई सुख का से वंचित रहेगी बाद में। समझ में ही नहीं आया किसी को, जब जब नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता, राइट। सो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर्स हमें एम्पावर करते हैं अपनी लाइफ का एक हीरो बनने के लिए। हम दूसरों को भी समझते हैं, अपने आप को भी समझते हैं, लाइफ ग्राफ को भी समझते हैं। लेट्स मूव ऑन सर। ओके, सो नाउ दिस इज वेयर आई वांट योर पेपर पेन्स अवेलेबल, नहीं तो आपके मोबाइल फोन्स पे। पहले मैं समझा देती हूँ, उसके बाद आप चाहे पेपर पेन ले आइएगा। हम सबके कोर नंबर्स होते हैं। हमारा बर्थ नंबर एक होता है, या साइकिक नंबर भी बोल सकते हैं उसको। सो हम बर्थ नंबर को मेंटेन करेंगे। बर्थ नंबर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरा बर्थ डेट है 18 तो मेरा बर्थ नंबर क्या हुआ? 1 + 8 = 9। तो आप सबका जो पहला जो कैलेंडर डेट है वो आपका बर्थ नंबर है। सो फॉर एग्जाम्पल नेहा खरे बैठी हुई है विद अनदर पर्सन। आप दोनों अपने अपने फर्स्ट जो आपका डेट है उसको रख लीजिए। जैसे मेरा 18 है, तो 1 + 8 = योर बर्थ नंबर। अभी तक का भी कॉल क्लियर ऑन दिस कि व्हाट इज बर्थ नंबर? जो डेट जिसमें आप पैदा हुए थे, मंथ नहीं, साल नहीं, सिर्फ डेट, दैट इज योर बर्थ नंबर। अगर सिंगल अल्फाबेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो वो हुआ। अगर 2 3 है तो 2 + 3 = 5 हुआ। एंड श्वेता, if किसी को डाउट होगा तो आप प्लीज उनको चैट बॉक्स में हेल्प कर दीजिएगा। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस आप डाल दीजिए, श्वेता वैलिडेट कर देंगी। मैं भी कर पाई तो मैं भी कर दूंगी। इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नंबर आता है लाइफ पर्पस नंबर, जिसको बाद के चार्ट्स जो आएंगे उसमें एलपी नंबर लिखा हुआ है। लाइफ पर्पस नंबर कैसे होता है? जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरा बर्थ डेट है 18, सो 1 + 8 = 9। मेरा मंथ है मई मतलब 5, सो 9 + 5 = 14। प्लस ईयर क्या है? 1978, सो 14 + 1 is 15, plus 9 is 24, plus 7 is 33, plus 8 is 41। 41 का मतलब 4 + 1 = 5। अभी क्लियर ऑन दिस? आप 2 मिनट लेके अपना कैलकुलेशंस कर लीजिए। आई विल प्रेफर कि आप वो कैलकुलेशंस एक बार ग्रुप में डाल दीजिए चैट बॉक्स में, जस्ट टू कंफर्म। सो श्वेता कनूडिया का वो अपना एग्जाम्पल दे रही हैं। सो अब उनका कैलकुलेशन जो आ रहा है, यस, सो प्लीज जस्ट कैलकुलेट। बी श्योर कि आपका क्या क्या आ रहा है। एंड एवरीवन कैन गिव एक मैसेज डालिएगा, नॉट 2 3 मैसेजेस। श्वेता का अगर बर्थ नंबर उन्होंने लिखा है तो साथ में नंबर आना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज ऊपर नीचे लॉस्ट हो जाएगा। सो सब एक साथ डालिए अपना कैलकुलेशन करके। टेक योर टाइम, वी आर नो हरी। इट्स नॉट अबाउट हरिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग हु वी आर। हमारे जो बर्थ नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है उसे समझना, कि उससे हमारी पर्सनालिटी कैसी होती है। ऋतु ने डाला है, इट्स अमेजिंग। सो ऋतु का कैलकुलेशन हम देखते हैं। उन्होंने 22 लिखा है, 22/5/1976। तो 2 + 2 + 5 is 9, 9 + 1 10, 10 + 9 is 19, 19 + 7 is 26, 26 + 6 is 31, 20 sorry is 32, so that is why it's 5, 3 + 2 is 5। सलोनी का आया है 4 and 2 6, 7, 7 and that's right, and that's right. So 4 + 1 5. Oh, they're going too fast for me. So I hope your calculations are correct. Shweta, just validate them once. So all you have to do is just yes. So I think we pretty much understood what we are doing. That's great. So Ruchi Madan, I'll just check Anju's quickly. So Anju's is 23, which is 5, 5 + 2 is 7, 7 + 1 is 8, 8 + 9 is 16, is 17, 17 + 7 is 24, 24 + 6 is 30, 30 is 3. Absolutely. So yes, thank you everyone. Somebody who's good in math can quickly check everyone's life purpose number, birth number. If they're posting, and just give it yes, no, and whatever. Similarly, now birth number का significance जो आएगा, हमारी personality कैसी है, हमारी qualities कैसी हैं, हमारा inner potential कैसा है, हमारी health कैसी है, वो हमारे birth number से मालूम पड़ेगा। जो life purpose number है, जो पूरी date है हमारी,
उससे हमें मालूम पड़ेगा कि क्या सीखते हैं हम लाइफ में, क्या किस चीज के लिए हम पैदा हुए थे, क्या चैलेंजेस लाइफ में आएंगे, कार्मिक पैटर्न्स क्या आ रहे हैं हमारे. ओके, सो यस, लेट्स मूव ऑन प्लीज. Shweta, please check. Akshay is also, Nidhi is also. Thank you, my dear, for all this. So अब हम आगे बढ़ सकते हैं. Are we good to go? आप सबने अपने कर लिए लाइफ पर्पस नंबर, बर्थ पर्पस नंबर कर लिया. So अब जिनका आया है, हम अब बात करें नंबर के इंटरप्रिटेशन से. सो आपकी पर्सनालिटी, सो लाइफ पर्पस, इसमें जो आपकी लाइफ के बारे में है, इसके बारे में बहुत नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये नटशेल में है. लेकिन अगर आपकी लाइफ पर्पस, फॉर एग्जांपल, अगर आपका बर्थ नंबर है 2, तो ये बर्थ नंबर की पहली 2 क्वालिटीज 2 के साथ है. और लाइफ पर्पस के एफर्मेशन है. एफर्मेशन क्या होता है? कुछ भी चीज पॉजिटिवली स्टेट करना, वो आपकी लाइफ में बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ आई एम लव, कि मैं तो प्रेम हूँ, everything around me is love. लोग बोलेंगे तो wrong English है. How can you say I'm loved? Just say I love, or I'm loved. But no, I'm saying I am love. मतलब मैं full on love हूँ. या मैं बोलती हूँ I am light. इसका मतलब everything around me is light. So affirmations, या मैं बोलती हूँ I am blessed. So I am blessed. इसीलिए ये affirmations आ रहे हैं. पहले जिन लोग का फर्स्ट नंबर है, आप प्लीज बी अटेंशन, प्ले अटेंशन टू योर बर्थ नंबर 1. अगर आपका है तो आपकी पर्सनालिटीज कैसी हैं. जिन लोग का भी 1 है, पहले पर्सनालिटीज देख लीजिए एंड प्लीज मेंशन इन द ग्रुप कि ये वाकई में आपका है भी कि नहीं. 99.9% बोलेंगे यस, ये हमारा है. अगर आप चाहें तो अपने अपने पार्टनर्स का, बच्चों का, पेरेंट्स का भी कर सकते हैं फॉर अ रियलिटी चेक. आपको मालूम पड़ जाएगा. You can take screenshots. I'm happy with that. If you want, please take them. And the ones who are registered already as students, आपको तो presentation आपके WhatsApp group पे मिल भी जाएगी. So number 1, your personality traits are what? आप में थोड़ी सी authority है. आप authority से बात करते हैं. बहुत intelligent है, very intellectual. You dislike criticism. कोई कुछ negative बोल दे, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता. And you live royally, just like king and a queen. You live. So anybody here with number 1? Is that how you are? अगर आपको अग्री करना है सो ग्रेट, नहीं अग्री करना है सो इट्स ओके. आई एम नॉट पुशिंग यू टू अग्री. आपकी हेल्थ कैसी रहती है? शायद आपको बाइल का थोड़ा सा गट सिस्टम में प्रॉब्लम आती है. आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सीमा बोल रही है यस, दैट्स राइट. एंड ऋतु बोल रही है यस, हर डॉटर इज. आपको अपर एब्डोमेन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती होंगी. ये आपकी हेल्थ के बारे में आ गया. जरूरी नहीं है सब कुछ सबके लिए वर्क करता है, बट 99.9% अंकित इज राइट. अगर आपकी लाइफ की एफर्मेशन लाइफ पर्पस नंबर 1 है, तो आपकी एफर्मेशन बहुत सुंदर है. आई एम्ब्रेस माई स्ट्रेंथ, इंडिविजुअलिटी एंड यूनिकनेस. तो प्रकाश बोल रहे हैं दिस इज हिज नंबर एंड दिस एब्सोल्युटली गोइंग विद हिम. सो आपकी लाइफ पर्पस एफर्मेशन अगर 1 है तो आप ये लिख लीजिएगा. नंबर 2, जिन लोग की लाइफ पर्पस नंबर 2 है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? सेंसिटिव है, इमोशनल है, टॉलरेंट है, सॉरी इनटॉलरेंट है फॉल्स प्रोमिसेस एंड ह्यूमिलेशन से. अगर कोई झूठ में बिना बात को प्रॉमिस कर देता है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है. कोई आपको थोड़ा नीचा दिखा देता है, बिल्कुल किसी को भी पसंद नहीं है. बट इन लोग को तो बिल्कुल भी नहीं चलता है. थोड़ी सी चीज भी इनको अपसेट कर जाती है, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है और बहुत इमेजिनेटिव है, बहुत इमेजिन करते हैं. और ऐसे लोग हीलर प्रवृत्ति के होते हैं, नेचुरल हीलर्स होते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी. चाहे अच्छा चेक कर लीजिएगा, अगर आपके घर में कोई डॉक्टर्स हैं, 90% उनका नंबर बर्थ नंबर 2 होगा. यू कैन लेट मी नो यस और नो, बिकॉज दिस इज हाउ इट वर्क्स. हेल्थ के मामले में लंग्स में एंड थ्रोट में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है. डाइजेशन सिस्टम में शायद प्रॉब्लम होगी. नर्व सिस्टम में बहुत, बिकॉज आप इतने सेंसिटिव इमोशनल होते हैं, तो ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम आपका हिल जाता है. सो यू मे हैव अ प्रॉब्लम विद नर्व्स. अगर आपका लाइफ पर्पस नंबर 2 है, सो आपकी एफर्मेशन हुई आई नर्चर लव, heal myself and others. Because ये inherent quality है, तो इसके लिए इसका affirmation ये है. Number 3, can I move on? Anybody with number 2, can you confirm that are these your qualities, or are these the qualities of your doctor people in the family? If yes, that's great. Otherwise, I can move on. जिनका number 3 है, date of birth, for example, अंजू ने लिखा था उनका 30 आया था, तो 3 है.
सो उनकी पर्सनालिटी और जिन लोग की नंबर 3 है उनकी पर्सनालिटी कैसी है? बहुत इंडिपेंडेंट है, दे लव टू वर्क ऑन देयर ओन, वेरी बोल्ड, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी एम्बिशियस, लाइफ में ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा अमेजिंग है, अपने डिसीजंस ले लेते हैं, आगे से आगे बोल देते हैं, झिझकते नहीं हैं, क्रिएटिव होते हैं और गाइड करते हैं दूसरों को भी, अपने आप को भी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ऋतु बोल रहे हैं कि सेकंड डॉटर ऐसी है, एंड मीनाक्षी बोल रहे हैं, ऋचा बोल रहे हैं। सो वेरी नाइस दैट आप सब रेजोनेट कर रहे हैं, दिस इज योर पर्सनैलिटी। तो अगर कोई नंबर 3 का इंसान है, बहुत रेयरली होगा जो अरे आप कर लो ना, अरे नहीं मुझे नहीं पता, ऐसे लोग नहीं होंगे, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं यार, आई कैन डू इट, दे हैव द जज्बा फॉर लाइफ। हेल्थ में शायद सियाटिका की प्रॉब्लम हो, शायद स्किन की प्रॉब्लम्स हो, शायद अर्थराइटिस, बोन्स की प्रॉब्लम हो, जॉइंट्स की, शायद नर्वस सिस्टम की या लिवर की प्रॉब्लम भी हो। अगेन ये चारों पांचों प्रॉब्लम है, नहीं जरूरत है, पर कुछ ना कुछ इसमें से होगा शायद। अगर आपके लाइफ पर्पस नंबर 3 है तो आपकी एफर्मेशन हुई, एक्सप्रेस माई सेल्फ वर्बली, क्रिएटिवली एंड लिव जॉयफुली। इसमें आप एक आई ऐड कर सकते हैं, आई थिंक वो ग्रामेटिकल वो एरर मिस हो गया। आई एक्सप्रेस माई सेल्फ वर्बली, क्रिएटिवली एंड लिव जॉयफुली, क्योंकि ये इनका असेंस है, इसलिए ये बोलेंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं नंबर 4 में। तो जिन सब के नंबर 4 है लाइफ पर्पस नंबर, उनके लिए एफर्मेशन लास्ट में है, बट बर्थ नंबर अगर 4 है, जो फर्स्ट 2 डिजिट्स का आपका है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? आप अनकन्वेंशनल है, नॉर्मल चीज पे नहीं चलते, कुछ नया सोचते हैं। आप रिबेलियस होते हैं कि नहीं ये नहीं, मैं ये करूंगी, मुझे तो ये करना है। आपने बोला डॉक्टर, सपोज पेरेंट्स से बोला डॉक्टर बनना, नहीं मेरे को तो आर्किटेक्ट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं है। सो यू डिसाइड व्हाट यू वांट, लिटिल रिबेलियस, एक स्टबर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं, हटी होते हैं, ढीठ होते हैं थोड़े से। मैंने जो बोल दिया मैं तो यही करूंगी, अब काम, अब तो कुछ भी हो जाए, अंगद का पाँव है, मूव ही नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज द वे आई एम। इंट्यूटिव होते हैं, एक उनको सिक्स सेंस आ जाती है कि मुझे तो ये करना है, मुझे तो अगर ऐसा ही होना चाहिए, बिकॉज दैट्स हाउ दे वर्क। So it's very beautiful to know that लोग ऐसे होते हैं। So Ritu is again saying कि वो है वो intuitive भी है, this works for her, health भी उनके लिए it's working। वो आगे पढ़ गए, चलिए। So health में आपके पास एनीमिया की शायद प्रॉब्लम हो, एनीमिया you may have little weak, you know, ब्लड प्रेशर की शायद इश्यू हो सकता है, शायद बैकएक या हेडेक भी हो सकता है। आपकी लाइफ पर्पस एफर्मेशन है, अगर आपका लाइफ पर्पस नंबर 4 है, I promote organizational order and make the world a better place. So because आप इतना orderly हैं, so this is your life purpose affirmation. So Saloni बोल रही हैं all correct, that means she's number 4. श्वेता बोल रहे हैं Shrivar is number 4, so उनके लिए भी बिल्कुल similar है, amazing. All right, so number 5, let's work on number 5. People with number 5. मीनाक्षी, we can't repeat, but sir एक बार वो वापस ले आइए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। We can't repeat for anybody, please get that very clear. We will not stall everyone's time, just take a screenshot, I don't mind that. Let's move on, sir. You can take a mobile से आप क्लिक कर सकते हो। Now we are back on number 5. So अगर आपका बर्थ नंबर 5 है तो आप एक चार्मर हैं, लोग चार्म हो जाते हैं आपसे। यू आर रेस्टलेस इन योर एनर्जी, बहुत रेस्टलेसनेस है, ट्रैवल करने का बहुत शौक है, इंट्यूटिव है और लॉजिकल है, बहुत लॉजिक से ही जाएंगे। ऐसे लोग यूजुअली जनरली इजीली मैजिकल वर्ल्ड में नहीं आना चाहते शुरू में। वो बोलेंगे क्या है ये मैजिक, यू नो, नहीं कुछ नहीं होता, सब जो काम करोगे ना वैसा ही होगा, मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता। तो ऐसे लोग बहुत लॉजिकल होते हैं। हेल्थ में इनके साथ क्या होता है, नर्वस सिस्टम में शायद प्रॉब्लम हाँ आए, हेडेक की शायद प्रॉब्लम आए, इंसोम्निया, रात को सो नहीं पाते, कुछ रेस्टलेस नेचर के हैं ये। अगर आपकी लाइफ पर्पस एफर्मेशन है, लाइफ पर्पस नंबर 5 है, तो आपकी एफर्मेशन हुई, आई एम्ब्रेस माई फ्रीडम टू एक्सप्लोर एवरी अपॉर्चुनिटी एंड लाइफ एक्सपीरियंस। आई एम्ब्रेस माई फ्रीडम टू एक्सप्लोर एवरी अपॉर्चुनिटी एंड लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब मैं रेडी हूँ फ्री होने के लिए, अपनी फ्रीडम को एम्ब्रेस कर रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नए एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, मैं ओपन रिसेप्टिव हूँ। सो नेहा ने बोला वेरी ट्रू, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। एंड कामाक्षी गर्ग, सो आपका नंबर 5 है, क्या ये ट्रेट्स आपके हैं? सो जितेंद्र जी, आपका बर्थ नंबर 4 है, तो लेफ्ट साइड में आप अनकन्वेंशनल हैं, रिबेलियस हैं, स्टबर्न हैं, इंट्यूटिव हैं,
और आपकी लाइफ पर्पस बिकॉज 5 है, तो आपके लिए एफर्मेशन ये जो है, जो मैंने अभी बताई, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। एंड इस एफर्मेशन को आप कहीं बोल्ड लिख के रख सकते हैं, जहाँ शायद बाथरूम में चिपका सकते हैं, आपके साइड टेबल पे चिपका सकते हैं, मोबाइल में रख सकते हैं, सो दैट यू नो बार बार आप उसको पढ़ ले एंड आपके अंदर रेजोनेट हो जाए, सिंक हो जाए, बिकॉज ये आपका लाइफ पर्पस एफर्मेशन है। छोटी सी एफर्मेशन बट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। नंबर 6 की पर्सनालिटी के ट्रेट्स कैसे होंगे? बहुत लविंग होंगे, बहुत प्लेफुल होंगे, इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, आर्टिस्टिक होंगे, लग्जरी बहुत पसंद होगी, वेरी लग्जरी लविंग। सो दिस इज हाउ नंबर 6 विल बी। उनकी हेल्थ कैसी होगी? थक जल्दी जाते हैं, थोड़ा ब्रेथलेस हो जाते हैं, किडनी यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, सो कोल्ड एंड कफ आ जाता है। So this is what is happening with people with number 6. We had already shared, Anju, I think you missed it. So I can personally share it with you because you were already a part of batch 1. So just remind me. Can't keep flipping back and forth, back and forth. So Nirmala says it's true with her with number 6. So very, very important to. So Shweta ma'am, we are only sharing these presentations with registered participants. We're not giving it out to everyone, yeah, because these these people are not very comfortable with their things being shared. पहले share किया था, so they're happy to have it on the screen. Like ये भी है मुक्ता रस्तोगी जो कल की न्यूरोलॉजिस्ट जो चक्रा वाले, they're not very very happy for it to go to everywhere. That's something screenshot ले लीजिए, मोबाइल से click कर लीजिए. So if the healers are, if they're not comfortable, no point. Yeah. So next is number 7. So let's turn the page. All right. So the number 7 people. So thank you, Nidhi, for saying that's true for you, and thank you for saying Anju that's true for Ajay as well. That's how it usually is. So now you know why you are like how you are. So number 7 का जो होता है, thinkers होते हैं, writers होते हैं, spiritual होते हैं, sensitive होते हैं, argumentative होते हैं। जो नंबर 7 में पैदा होते हैं ना, आपको शायद पता भी नहीं स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, लेकिन आप पैदाइशी स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि 7 कलर के रेनबोज होते हैं, सप्तऋषि होते हैं, बहुत कुछ 7 से होता है, आपकी इनबॉर्न है। अब अगर आप इस जर्नी में आ रहे हैं, इफ यू आर स्टार्टिंग दिस जर्नी, बहुत जल्दी इस वर्ल्ड का आपको फायदा मिलेगा, बिकॉज आप तो बॉर्न स्पिरिचुअल हैं। हेल्थ में शायद आपको अगेन अर्थराइटिस का प्रॉब्लम आएगा, शायद नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आए, शायद स्किन एंड स्टमक में प्रॉब्लम आए। अगर आपका लाइफ पर्पस नंबर 7 है, so you'll discover your spiritual truth. I discover my spiritual truth and improve my quality of life. So बहुत important है आपके लिए affirmation बोलना, because अब आपने discover करी नहीं है, पर धीरे धीरे आपका shift शुरू हो जाएगा, because आप अपना spiritual सत्य जान पाएंगे, आपकी quality of life immediately better हो जाएगी। Spirituality से क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी सिर्फ आपको अबंडेंस ही अबंडेंस मिलती है, हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, हर जगह से मिलेगी स्पिरिचुअलिटी में, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, फिजिकली, हर जगह से। सो ऑलराइट, नंबर 8, पर्सनालिटी ट्रेट्स। हाउ आर यू काइंड ऑफ अ पर्सन? आप विजडम है, आप में बहुत है, यू वेरी वाइज, यू वेरी हार्ड वर्किंग, दूसरों के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं, अथॉरिटेटिव हैं। आपकी हेल्थ में आपको शायद ईयर एंड स्पीच में प्रॉब्लम्स आए, शायद र्यूमेटिज्म हो, शायद एब्डोमेन में प्रॉब्लम आए। आपका लाइफ पर्पस एफर्मेशन क्या है? सो अगर सलोनी आपका एलपी नंबर 8 है, तो ये आपकी नहीं, ये एलपी नंबर्स के लिए नहीं है, ये ब्लॉक्स हैं बर्थ नंबर्स के लिए। सारे कंटेंट सेम है, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, इट्स ओनली एलपी नंबर की सिर्फ एफर्मेशन है, बर्थ नंबर की ट्रेट्स और हेल्थ है। आई होप इट्स क्लियर। यस। सो अगर आपका लाइफ पर्पस नंबर 8 है, सो आपकी एफर्मेशंस हुई, I adopt an attitude of abundance and reclaim my personal power. So आपका जो attitude है abundance का, वो आपको मिलेगा, और आपकी personal power आपको ज्यादा मिलेगी अगर आपने affirm कर लिया। जिनका number 9 है, जैसे I am a number 9 trait, my birthday is 18, so I am 9. I'll talk about this. So I am very very courageous. कुछ भी करवा लो, सब चीज की हिम्मत है कि मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, like, and I've been brought up like that. So I'm the second daughter. We had 3 sisters and I had a brother. So उसके जाने के बाद उसकी अल्कोहल की फैक्ट्री थी। इंडिया में 135 करोड़ लोग हैं, इतनी अल्कोहल की फैक्ट्रीज हैं, not a single woman is running, but my sisters were like only Prachi can do it because
उसमें बड़ी हिम्मत है. So I'm very courageous. कुछ भी कर सकती हूँ. जब मुझे कैंसर हुआ था, किसी को नहीं बताया था except for my guru Nitya Shanti and my best friend Ruchika Rathi. अपने कीमोथेरेपी 8 महीने 9 महीने करा ली, किसी को भी नहीं बताया था. इतनी हिम्मत है. कंपेटिटिव भी हूँ because in a very beautiful way, like I love competition. उससे लगता है कि जज्बा है कि अरे numbers are going up. So अच्छा काम करो, दूसरे को bless करो, अपना भी बढ़ाओ. So yes, I am competitive also. I'm very determined. कुछ करना है तो बस करना ही है. ठान ली तो बस ठान ली. करना है तो करना है. Nobody can shake me, nobody can break me. I'm very outspoken. जो मन में आता है बोल देता हूँ. श्वेता knows best about this. सब कुछ बोल रही हूँ, openly बोल रही हूँ. क्या है कुछ नहीं. No filters attached. No diplomacy. That's the way I am. Health में skin eruptions happen, and believe me, I do have some skin things I used to have. Now I don't. Ulcers and piles, yes, I've gone through them also. Now no longer in this world of healing. Ab nahi. Blood pressure, God's been kind, no blood pressure. God's been kind, no eye problem. But so इसीलिए मैं आपको बोल रही कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, right? Now life purpose affirmations, so क्या होती हैं? जिन लोग का life purpose number 9 है, उन लोग के लिए I am compassionate to others and experience compassion in return. जिन लोग का है, उन लोग के लिए है. So Niriksha, I think, are you like this? The way this is written? आपके साथ qualities match कर रही हैं? You're saying you're also number 9. So is this your qualities? Are these your traits? So this is what we are basically understanding about ourselves. So yes, that's what I thought. So these are pretty much there for everyone. Let's move on. And I will try and ask, so thank you so much, Rahul sir. Thank you so much to this beautiful speaker. So now I'll ask her today, if you all want this presentation, if she permits, I will share on all the groups. It's not a big deal if she's comfortable. Kal ki presentation, so she's not comfortable to share. Jo chakras wali hai. So wo to most definitely not. Ank Vidya, she may be, Anjali Rajwani may be open for it. So we will try and broadcast if possible. No promises. इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था that let's just have our, thing. All right. So any questions so far? Any questions at all? Abhi tak kuch bhi. All right. So I'll request Shweta to share her reflections on how this began journey and kaise inko fayda hua. So I want people to know that Shweta, or maybe I can ask Prakash. So let me start with Prakash. Rahul sir, please put Prakash and Jigisha on the spotlight. Why I want you to hear from people is Prakash and I met through again Rahul sir's batch. We never knew each other. बिल्कुल नहीं जानते थे. We were reading some books together and he came in this batch, and how it changed his life, only he'll know better. You did not resonate with birth number 4. That's okay. Acha, mic is not working. That's not a problem. So Niriksha, would you want to share something? And then of course Shweta can share. So if you want to share, Rahul sir, Niriksha Daga, let her share. Can you raise your hand? It will be easy for him to spot. So all I want to tell you is, let's understand something about life. हम यहाँ आए हैं accident से तो नहीं आए. 5 बजे Sunday को we are here logged in. There is some reason why we're here. So just go with the flow, understand. And I'm not asking you too much. I'm just saying the first 4 days we're creating, 3 days especially. So please start creating your life. Come for these first 4 days, see if it resonates with you. And anyways, 12 days. So why 12 days? I'll tell you, I believe in Dashanj. 10% of my time is for Seva. Every day I'm coaching for 2.5 hours. 10% of my money that I earn is for Seva. I empower life. So we have Bond 1-to-1 for Life Trust. So money goes in there and I empower. So 10% of our 1-to-1 days is 12 days. That is also coming for everyone. Whoever wishes can take it, like come and do it. So that is why we're here. So Shweta, Niriksha, please share with us. What was your, how did you meet us? How did you get to know about us? And what did you go through in the 1-to-1 day journey? So she was a part of the batch too. Yes, please. Good morning, everyone. So basically how I know Prachi is like our Lady Circle National President. So I came to know, I hope I'm audible. Very audible, thank you. Yeah. So I came to know about her when she was the national president. That it's the same year I joined the organization. And I mean, when I used to see her Facebook page, and I also came to know from Facebook
when the LTS1 people had given their testimonies. So I was very much keen. I was very much keen in knowing about everything. So I joined. But then when I joined, it really changed my life. I mean, I came to know how we can manifest things, how we can make our dreams come true. So it was really life changing. And waking up so early for me was a little difficult, but Prachi has taught us all. And I mean, so much of gratitude has come in our lives and so much of positivity. And I actually have learned to control my anger also, because when you look things at with different perspective, आपका anger मतलब अपने आप कम हो जाता है. तो and with manifestation, gratitude, and meditation, it has brought a lot of change in my life. So yes. Thank you so much. Thank you for sharing your light, Niriksha. So So yes, I am Prakash, so yes, grateful yeah. for grateful to Prachi. I mean, for getting this change for us. But I just want to know why you're here today again in the morning. I mean, आपकी life तो transform हो चुकी. You want more or what? Less newer people should come. You want? Obviously. I mean, this has become a part of life. You know, कि नहीं ये तो चाहिए ही. Okay. Okay. That way. Thank you, Niriksha. Thank you for your faith. Thank you, my dear. So Prakash, and I want to share one thing with you. Prakash का नाम होता है light, and that's also a part of our LTS3 का theme, love and light. And this man is full of wit. You know, he brightens my morning. So it's nice to know that Prakash and Jigida as a couple, they've become so important for me because they were in the Sangha too. And we really had a beautiful time with them. So yeah, Prakash, you can share your light. Hi, morning everyone. I joined because me and Prachi already were co-batchmates in BCI course. So manifestation was not new to me. Ajis had introduced to us, but how to do it and really art of doing manifestation was taught by Prachi, and creative visualization brought more power to it. And now whatever we manifest, me and Jigisha gets real most of the time. And now my son is also into this. And basically हम लोग शायद थोड़े बहुत ज्यादा सोचते हैं तो वो मैनिफेस्टेशन इतनी जल्दी पूरे नहीं होते. माय सन इज रॉ, तो जितना जल्दी वो उसके मैनिफेस्टेशन पूरे होते हैं, रात को वो कुछ मैनिफेस्ट करता है, दूसरे दिन पूरा हो जाता है. So he has also learned, bro. So this is in our family now. And in 4 month journey, we learned a lot about health and spirituality. So this course is basically for your mental health and physical health also. So I have gained a lot, and basically in business also, as I told that day also, Prachi rocket lag gaye. So I don't know how it is happening, but it is happening. And I shared in last session also that we got money, sudden money we got. वो हम expect भी नहीं कर रहे थे, पता नहीं कहाँ से आ गया. And when we are doing magic book, so magic is also happening. And we are joining this LTS3. We'll try to join this, but I don't know whether I'll be able to continue. I'll be able to join for all 4 months. I'm not sure. Yeah, and I would request you not to join if possible, because इतना सीखा है 1-to-1 days में, अपने करके तो देखो यार. Shweta is a live example, मतलब amazing बंदी है. Shweta, Rahul sir, let's have Shweta on the screen. So you know why I believe these 1-to-1 days are enough for all of us. वो अलग बात है, we have growth for learning. So Alona probably will be next. She was in 1, she was in 2, she's also in 3. And I'm surprised, amazing. But probably there's such new books coming up. So people want to come, but otherwise, do you really need the other sessions? Shweta, please share with us. Good morning, everybody. I'm really thankful to Prachi
because this life transformation series indeed has transformed me. माइंड, बॉडी और सोल सब में चेंज आ गया है, लाइफ मैजिकल हो गई है. राहुल सर ने मैजिक बुक इंट्रोड्यूस किया था. आफ्टर दैट प्राची ने मैजिक हमारे लाइफ में इंट्रोड्यूस किया. पहले मेरे हेल्थ प्रॉब्लम्स थे. आई हैड सिवियर हेडेक्स और मैं महीने में कम से कम भी 10 से 15 टैबलेट खा लेती थी. मैं स्कूल जाती थी, आई एम एन एजुकेटर, मैं स्कूल जाती थी लेकिन मैं दवाई का पत्ता लेके ही जाती थी. एंड नाउ इवन व्हेन आई गो आउटसाइड एट टाइम्स आई फॉरगेट टू टेक माय मेडिसिन. ऑल थैंक्स टू प्राची मेरा हेडेक गायब हो गया है. मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल नहीं होता है, बट हाँ मैं 1-2 बार खाती हूँ महीने में, विच इज फाइन, और वो भी अब थोड़े दिन में कंप्लीट चला जाएगा. सो इट्स एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड मी. एनर्जी फ्रंट पे आई एम ऑलवेज एनर्जेटिक, आई एम इन लव विथ लाइफ. सेकेंड थिंग इज मैजिक अपने काम के प्रति. आई हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग लाइफ कंप्लीटली. पहले मुझे डर लगता था, आज ये ऐसे अच्छा होगा ना, कल ये अच्छा होगा ना. प्राची ने सिखाया है, सरेंडर कर दो, भगवान सब अच्छा करेगा. द यूनिवर्स विल डू एवरीथिंग वेरी वेरी क्रिएटिवली और बहुत अच्छे से करेगा. आई हैव बिकम मोर ओपन एंड रिसेप्टिव टू एवरीथिंग इन लाइफ. मेरे अपने अगल बगल भी पहले बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे जो शायद दिखते ही नहीं थे, लेकिन अब आई एम अट्रैक्टिंग ऑल ऑफ देम. Again, all thanks to this course. So, on the spiritual front, it's a divine journey. In fact, मैंने प्राची को कल ही धन्यवाद दिया है that it started coming in the school also. So many kids, but we are trying to bring it in our curriculum so that we can bring a complete difference. उनको लाइफ पता चलेगा. प्राची ने मुझे मेरे अपने आप से मुझे अलाइन कर दिया है. यू नो पहले मुझे आई वॉजंट सो कनेक्टेड, मुझे समझ में नहीं आता था कि कोई भी चीज क्यों हो रहा है. नाउ आई नो कि हाँ ऐसे हो रहा है तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. सो आई हैव स्टार्टेड रियली ट्रस्टिंग लाइफ एंड एंजॉइंग लाइफ. बिलीव मी, दिस इज अ ब्यूटिफुल जर्नी and it puts in a lot of love for life. Thank you so much, Prachi, for everything. God bless you, Shweta, and thank you for being the channel of love and light. Because of you and Sunbeam, so many thousands of people have benefited from this course just because you were the light. So thank you, thank you, thank you for that. Thank really, you thank so you. much. Thank you so much. मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी. प्राची बहुत स्ट्रेस करती है असाइनमेंट, अभी मिलेंगे तब असाइनमेंट पे, वो भी मेरे लाइफ को चेंज कर दिया है. ग्रैटिट्यूड जो प्राची सिखाएगी प्लस द मेडिटेशन, it actually changes your life. So please go for this course. It's a life changing course. मैं तो स्कूल में बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. So and Prachi is the guiding light behind it. So thank you very much, Prachi. Thank you, my dear. Thank you so much. So I really thank Shweta, because Shweta hai to this course began. Otherwise, it really won't have begun. So thank you, Shweta. Thank you for sharing your love and light. So now I want to take you all through the flow of this beautiful day. So let's just see what we have planned for you in these one-to-one days. So Rahul sir, can we have that slide, the PPT presentation? And meanwhile, if anybody wants to share, we have Usha ji. Usha ji is in her 60s, I think, late 50s, 60s. She's also been part of it. So this is a very important part. इसके पहले का slide ले आते हैं, sir. Yes. So this is a timeline for our content. What are we going to do? आज Sunday है, 12th है. आज हम एक basic orientation कर रहे हैं, introduction कर रहे हैं, Born 1-to-1 for Life का. हम क्या 11 books पढ़ने वाले उसके बारे में. Symbolic meaning हम कर चुके हैं 1-to-1 days का. 1-to-1 seekers is what I'm looking at. So the registrations जहाँ 121 couples से ऊपर आ जाए, I will not be taking in the morning batch because that's what I'm guided to do. फिर आप virtual batch में जाएंगे जहाँ आपको session share हो जाएंगे YouTube के, आप अपने comfort zone पे कर सकते हैं. But people here who are members of the first Sangha और second Sangha, उनको पता है कि live energy morning में routine पे लाती है. Power of Dreams में भी sun है, मैंने बताया, so morning is very important. 1 घंटे 21 मिनट का सेशन होता है, थोड़ा 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है,
कम तो नहीं होता, ज्यादा ही हो सकता है। हम न्यूमरोलॉजी करने वाले थे जो हमने कर ली, उसका इम्पैक्ट क्या होता है हमने थोड़ा बहुत समझ लिया, रिफ्लेक्शंस हो रही हैं। कल हम क्या करेंगे, हम कल 7 चक्रा बैलेंसिंग की बात करेंगे, कैसे अलाइनमेंट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको हम अपने आप कैसे ठीक कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स की जरूरत नहीं है, हम अपने लिए हीलर्स हैं। एक पावर ऑफ ड्रीम्स का प्रोग्रामिंग हमने वर्क किया है, जहां हम आपको बेसिक आइडिया देंगे। वो हम रोज सुबह करने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 1 to 1 डेज फ्रॉम 16th 13th को कल हम इंट्रोड्यूस करेंगे। बाकी उससे हम अपने ड्रीम्स बिल्डअप करेंगे, विजुअलाइज करेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग। ये क्या टर्म्स मैं बोल रही हूँ शायद अभी नहीं समझ में आए, बट आ जाएगा बाद में। कल हम मेडिटेशन की और ब्रीदिंग की बात करेंगे, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू मेडिटेट, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू ब्रीथ। और हम एक मेडिटेशन सैंपल भी करेंगे, जिससे आई एम श्योर आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। सितंबर 14th ट्यूसडे हम करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। प्रॉपर 1 घंटा इसमें लगने वाला है। कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे ड्रीम्स को पूरा साकार करते हैं। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑल माई लाइफ, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस साइंस। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एज आई एम अ मोनोलॉजर, मोनोलॉजर मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के बारे में बात करते हैं, आई एम अ मोनोलॉजर। सो न्यू मून आता है, हिंदी में हम उसको अमावस बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। न्यू मून, फुल मून की बात करेंगे। मोनोलॉजी से हमारे सपनों में क्या कोरिलेशन है उसकी बात करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है उसकी बात करेंगे। एफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आज हमने पढ़ी एलपी एफर्मेशंस, उसके बारे में विल अंडरस्टैंड। ड्रीम जर्नल्स के बारे में बात करें, कैसे हम अपने ड्रीम्स को लिखते हैं, जर्नलिंग करते हैं। September 15th is the last day of our orientation. यहाँ हम कैसे प्लान करना चाहिए अपने टाइमिंग को, अपना स्केड्यूलर कैसे बनाना चाहिए। सो बचपन से माय ग्रैंडफादर, माय बाबूजी, माय नाना जी, ही टॉट मी अ स्केड्यूलर। टाइम टेबल स्कूल के सबके होते थे, बट ही हैड टू मेक, हमको स्केड्यूल बनाना होता था कि हमें इस समय स्पोर्ट्स करना है, इस समय ये करना है, इस समय फैमिली का टाइम है, इस समय डिनर, वी हैड टू मेक दैट। सो बचपन से स्केड्यूलर इज इन मी, सो आई बीन डूइंग दैट। अर्जुन इज माय कोच, उन्होंने और को हाईलाइट कर दिया। उस दिन मैं आपको 5 बुक्स से मिलाना चाहूंगी जो आपकी लाइफ में एक बन जाएंगी। सो व्हेन यू आर पेइंग योर रजिस्ट्रेशन फीस व्हिच इज 7121 फॉर लाइव सेशन, उसमें आपकी 5 जर्नल्स आपको कुरियर होके आएंगी। इन जर्नल्स को मैं फुल मून पे एनर्जाइज करती हूँ। इनमें हमें क्या असाइनमेंट्स करनी होगी रोज, वो आएगा। सो आपको थोड़ा टाइम देना होगा अपनी प्रोग्रेस में। इफ यू डोंट मेक आउट टाइम, ये नहीं कि आपको 5 जर्नल्स एक साथ करनी है, यू कैन मेक योर टाइम, कभी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, यू कैन प्लान। पावर ऑफ 7 क्या है, अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी लाइफ में, तो आप और मैं नहीं पढ़ पाएंगे। स्कूल में रिमेंबर वी यूज्ड टू हैव एग्जाम्स एंड रिव्यूज, हमारे रिजल्ट्स आते थे। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, वो अपना सोते रहेंगे, दे विल नॉट स्टडी। यहाँ पर भी आप 1 to 1 डेज के लिए आ रहे हैं हमारे पास फॉर ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ। सो असाइनमेंट्स करना इंपॉर्टेंट है। अकेले आप हो जाओगे तो आपको 7 लोग का ग्रुप दे दिया जाएगा। एंड इसमें कुछ पास्ट मेंबर्स जो संघा ऑलरेडी हैं, वो एंजल्स या गार्डियंस बन जाएंगे, जो आपको मोटिवेट करेंगे। एंड यू विल बी डूइंग योर बिट वेरी ब्यूटिफुली। सो ये आपके बारे में बताया जाएगा। इंपॉर्टेंस की आपकी कमिटमेंट, आपकी इंटेग्रिटी, 10% आपका डे ग्रोइंग के लिए जाए, जिसमें आप अपना मैनिफेस्टेशन करें, आप अपना मेडिटेशन करें, आप अपना राइटिंग वर्क करें। ब्लेसिंग्स क्या कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं ब्लेसिंग्स, उसके बारे में बात करेंगे। लोटस ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ मैजिक भी होगा। सो इस दिन हम एक मैजिक का चैप्टर भी पढ़ेंगे। मैजिक बुक इज बाय रोंडा बर्न, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक आई हैव एवर रेड, and it's a gift from my coach Rahul Jain to all of us, the community and everyone. Let's move on to the next one. So now this is a flow of our 1 to 1 days. 16 सितंबर को शुरू होगा ये प्रॉपर फ्लो, 4 days of introduction के बाद until 10th of January। इस कंटेंट्स में आपके 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपने बहुत बार सुना होगा माइंड, बॉडी, सोल, बट इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जब आपको माइंड, बॉडी, सोल के बारे में मालूम पड़ेगा, तो आपको अपने लाइफ के पर्पस के बारे में मालूम पड़ेगा। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी डिस्कवर करेंगे। स्पिरिचुअलिटी, कोई लोग बोलेंगे क्या स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिट्स एक्चुअल रियलिटी। स्पिरिट मतलब आत्मा। तो अगर आपने सुना हो आत्मा नमस्ते, मतलब मेरी आत्मा से आपको आत्मा नमस्ते कर रही हूँ, और इंग्लिश में इसको डिटेल में बोलते हैं द हाईएस्ट इन मी बोज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू। आपकी आत्मा का एक्चुअल क्या पर्पस है, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। एंड
When you are in that purpose, आपकी लाइफ में abundance ही abundance होगी. रिश्ते बेटर हो जाएंगे, finances बेटर हो जाएंगे, health बेटर हो जाएगी, पूरे mind body soul में आपकी improvement आएगी. लेफ्ट में जो हमने लिखा है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. जो राइट में हमारा है, माइंड के लिए हम बुक्स पढ़ने वाले हैं. सिंपल स्टेप्स टू इम्पॉसिबल ड्रीम्स. इट्स एन एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग बुक बाय स्टीवन स्कॉट. इसको हम बहुत ग्रेजुअली पढ़ेंगे. 16 सितंबर से 10 नवंबर पढ़ेंगे. सो मेरा सेशन कैसे होता है? In this session, we have everything. We will start with a manifestation, which is the power of dreams programming. आपको समझ में आ जाएगा. Then we will go on to a book reading. Then we will go on to not one but 2 or 3 book readings. फिर हम meditation करते हैं, फिर हम blessings करते हैं. बीच में हम सूर्य नमस्कार भी करेंगे for just about 3 sets for about 5 minutes, because आधा पौना घंटा बैठने के बाद बॉडी की एनर्जी स्टैटिक हो जाती है एंड यू स्टॉप बर्निंग कैलोरीज. तो जो बॉडी की बात है, so we even need movement. So उसके लिए हम सूर्य नमस्कार भी करेंगे in the middle of the session. So Art of Creative Thinking is a very beautiful book. कैसे creatively सोचना चाहिए हमें अपनी लाइफ क्रिएट करने के लिए, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं 11 नवंबर से 10 दिसंबर. ये बॉल पार्क आइडियाज है टाइमलाइन की, प्लस माइनस होगा शायद. सो रॉड जुनकिस ने ये बुक लिखी थी. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक. जिन लोगों को वेल्थ की प्रॉब्लम है, मनी की प्रॉब्लम है, how to tap into wealth. Wealth is so easy to bring. How to tap into wealth, उसके बारे में आएगा. Refuse to choose is about Barbara Share. She's written this book. हम लोग लाइफ में कई बार डिसीजन नहीं ले पाते. ये करें, ये करें, ये करें, क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए ये बुक हमें हेल्प करेगी. Letting go, छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम पकड़ के बैठ जाते हैं, अटैचमेंट कर लेते हैं. सरेंडर कैसे करना है, उसका ये फाइनल स्टेज आने वाली है. इसके बारे में हमारी बॉडी के बारे में एक बुक है, मैजिक वेट लॉस पिल. इसके बारे में मैं पावर फैक्ट्स बताया करूंगी आपको. ये इन अ वे आपको अपने आप थोड़ा सा करनी होगी. वी विल स्टडी ऑल्सो, बट आपको एक जिस्ट मिल जाएगा ऑन हाउ टू एक्चुअली मेक योर बॉडी बेटर. लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस हैं 62 इसमें. सो ये हम ग्रेजुअली करेंगे. वी विल स्टार्ट, आई एम नॉट श्योर 16 को शुरू करेंगे, कब करेंगे, but I will start on 16th with a very beautiful practice by Luke Cotino. So I follow Luke Cotino very beautifully. I think a lot of you probably follow him and his videos. उनके साइंसेस यहाँ पर आएंगी. सन सैल्यूटेशन से सूर्य नमस्कार गाइडेड एक वीडियो चलेगा रोज आपके सामने. सो उसको फॉलो कर करके आप सारे करेंगे. शुरू में आपको और वीडियोस भी आएंगे जो रजिस्टर कर रहे हैं या इवन अदर पार्टिसिपेंट्स. श्री रविशंकर जी के कुछ वीडियोस हैं, वो भी शेयर करेंगे with his tribe, with all of you, so that you can learn the simple way of सूर्य नमस्कार. Because हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, नमस्कार करेंगे तो हमको ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, हमारा डे बेटर जाएगा, हम अपने आप को और पावरफुल बना पाएंगे. सोल एंड स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं. So we will have this power of dreams programming, which I talked about in the morning. We will introduce this concept to you very soon. There's this beautiful book called Heart Thoughts by Louis Hay. So हर दिन एक हम हार्ट थॉट पढ़ते हैं. हार्ट थॉट इज ऑल्सो इक्वल टू एफर्मेशन. सो हम ये एफर्मेशन रोज लिखेंगे इन आवर जर्नल्स. विल टॉक अबाउट दैट. There's this very, very, very beautiful book called Incredibly Believable. This is by Sunny Platon. It's about the shift. इसको हम शुरू करेंगे from 16th. It's the most amazing book, and when you read it, you'll fall in love with it. Magic, many of you may have heard. कई बार कई लोगों ने बात करा इसके बारे में. So Magic is by Rhonda Byrne. ये भी हम पढ़ेंगे इन नटशेल. पर इसके लिए मैंने क्रैश कोर्स बनाया हुआ है, जो आप कभी भी 10 से 15 मिनट के लिए अपने एयरपॉड्स लगाकर गाड़ी चलाते हुए, वॉक करते हुए सुन सकते हैं. You don't have to read it. This can be your extra time that you can give to yourself. Of course, we will try to read it, but no commitment. Mirror Work is a very beautiful book. It's changed my life. It's by Louis Hay again. इसको हम करेंगे. It's for self love. अपने आप को कैसे रिस्पेक्ट करना है, अपने आप को कैसे लव करना है, इसके बारे में मिरर वर्क होगी. क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इज अ बुक बाय शक्ति केवैन. इस बुक में बहुत सुंदर सेक्शन है मेडिटेशंस का, वो हम इंडिपेंडेंटली करेंगे. बुक को पढ़ेंगे सो दैट हमें टूल्स मिले ऑन हाउ टू क्रिएटिवली विजुअलाइज. Very, very important to understand that these 11 books have come to us for a purpose, and this will be our curriculum for the next 1-to-1 days. Any questions so far about this? Sir, thank you so much for showcasing. And meditation hoga every single day without any fail. So is there any question that we have about anything right now? If yes, please raise your hands. Rahul sir can unmute you so that we can have, or if anybody wants, we can share reflections
विल यू वांट टू शेयर रिफ्लेक्शन? उषा जी, आप बोलना चाहेंगे आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? सो मे बी राहुल सर, जय मथुराशा जो नाम है उसको प्लीज आप कर लीजिए। सुप्रिया, हार्ड कॉपीज हम नहीं भेजते आपको। हार्ड कॉपीज वी कांट, इन 7121 वी कांट अफोर्ड टू सेंड यू बुक्स वर्थ 2-3-4,000। हम आपको 5 कॉपीज जर्नल्स की भेजते हैं असाइनमेंट्स के लिए। सॉफ्ट कॉपीज हम भेजते हैं आपको, जो आप रजिस्टर कर जाते हैं, सो यू कैन सी देम ऑन योर मोबाइल्स, ऑन योर आईपैड्स, ऑन योर लैपटॉप्स, so that we will send you। हार्ड कॉपीज आपको खरीदनी है तो खुद खरीदनी पड़ेंगी, बट यू डोंट हैव टू बाय, क्योंकि हम सेशन जब हम पढ़ते हैं स्क्रीन पे किताब होती है, सो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, अनलेस नॉट आपको अपने आप घर में पढ़नी है तो। And उसके लिए भी आई वुड से द बुक्स आर नॉट सो इनएक्सपेंसिव। अगर आप बुक लवर हैं, खरीदना चाहते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज पीडीएफ्स बेचते हैं, आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, दैट विल बी लिटिल इकोनॉमिकल, but completely depending upon you। I'm a book lover, so I too keep buying books all the time, so depends upon you। Yes, Usha ji, you want to share something? So Ritesh sir, Sanjay sir, sorry, Rahul sir, let's have Usha ji share. So, and in the 7121, when we are charging 7121, आपका amount जो जा रहा है, why they are going into trust? Because I truly believe, जैसे मैं करती हूँ, 10% अपना टाइम सेवा में, 10% अपना मनी सेवा में। मुझे लगता है हमारी लाइफ में वो चेंज नहीं आता, वो मैजिक नहीं आता, अगर हम कुछ चैरिटी नहीं करते, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते। चैरिटी इज नॉट अ वेरी ग्रेट वर्ड, आई विल से एम्पावर लाइफ नहीं करते। जो हमसे अंडर प्रिविलेज हैं, उन लोग की लाइफ में प्रिविलेज ऐड करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट संघा से हमने एक प्रोजेक्ट किया था, लेपर्स कॉलोनी है दिल्ली में, वहां उनके पास अछूत बोलते हैं उन लोगों, कई लोग उनके पास कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम थी, तो हमने उनको एक 200 लीटर का कूलर दिया। अब पूरी कॉलोनी ठंडा पानी पीती है इन द राइट वेदर, इट्स बिकॉज ऑफ द संघा। हम सब ने आगे किया, इसीलिए वो आगे बढ़ा। सेकेंड बैच में जो संघा है, हमने अपना मनी कमिट किया है टुवर्ड्स अ स्कूल अराउंड टेबल लेडी सर्कल स्कूल, जहां क्लासरूम्स बना रहे हैं फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, सो वहां ब्रांडिंग भी आएगी। So we do very beautiful acts of, empowering lives. It's not about just empowering lives, it's about empowering lives for an act. So उसके लिए ये करते हैं। That is why आपका मनी जाता है। और मनी कहाँ जाता है? Zoom services इस बार आ रही हैं एड ऑन, मेरे को तो आइडिया भी नहीं था how expensive they are। श्वेता का स्कूल का कलेक्शन था, so we're very happily using it। We had no clue। So now that is there। Rahul sir is working with us, Amrita ma'am is working with us, उनकी salaries जाती हैं। So, and आपकी journals का amount जाता है। So yes, that's looked after the admin bit and the charity। दो ही aspects हैं। मैं ये sessions क्यों करती हूँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं, आपने भी पूछा है। So प्राइवेट मैसेज पूछा है, पब्लिकली पूछ सकती थी, आई एम ओके विद इट। सो मैं इसलिए करती हूँ कि मैं इंटेग्रिटी में रहूं। पहले मैंने आपको बताया कि आई बिलीव इन दसवंत एंड दशांश, दिस इज माय सर्विस, ये मेरी खुद की सेवा का टाइम है। आई बिलीव जितना मैं दूंगी उतना मुझे मिलता है। सो आई एम सेल्फिश, आई एम वेरी सेल्फिश। मैं सेवा कर रही हूँ अपने खुद के गेन के लिए। एक तो सुबह मुझे पढ़ने को मिलता है ब्यूटीफुल बुक्स, आई कैन गो थ्रू देम अगेन, आई गेट अ ब्यूटीफुल संघा। आई एम इन माई लाइफ, मेरी कमिटमेंट है, इंटेग्रिटी है, और मेरी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। सो पीपल हु नो अबाउट मी, दे नो मेरी लाइफ में मैंने क्या क्या पाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेवा भाव। सो दैट्स व्हाई आई डू इट। इसके लिए मनी में नहीं लेती, भगवान का बहुत बड़ा हाथ है मेरी जर्नी में, यूनिवर्स हैज माय बैक। So for my money, my businesses are more than enough। This is just my सेवा। And अगर आप कैलकुलेशन भी करके देखें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 7121 is not enough for me to take even 1 rupee out of it। So I'm very happy to be just doing my सेवा। So it's not about me and money। That's why trust बनाई थी कि कभी भी गलती से भी मन में विचार भी नहीं आ जाए कि मुझे इससे प्रॉफिट चाहिए। So शुरू से ट्रस्ट चैरिटी बना के रखा है। So that's why this is there। So any questions? Otherwise, of course, Usha ji can share। We'll have the last speaker for the day, Usha ji, and then we'll have the session closure with a little bit of blessings। So yes, Usha ji, please share your light। थैंक यू प्राची। सबसे पहले मैं थैंक यू देना चाहूंगी कि मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, एंड नाउ आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन। ऐसे पहले भी मैं बहुत खुश थी, पर मेरे को लगता है कि जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को इसी प्लेटफॉर्म से मिला है। मतलब एक तरह से मैं कहूंगी कि हमारे जो जो मेरे अंदर का दिया था वो बुझा हुआ सा था, तुमने उसे मेरे को वापस जला दिया है। आई एम सो हैप्पी कि मतलब आई थिंक कि मैं इसी सब चीज को ढूंढ रही थी कि मुझे क्या चाहिए।
नाउ आई नो कि कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। इससे पहले जी तो रहे थे पर मजा नहीं आ रहा था। नाउ आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। बहुत कुछ है मेरे को कहने के लिए, पर दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्राची। बहुत कुछ सीखा है इन 1 to 1 डेज में, बहुत बहुत कुछ सीखा है। लगता है कि इससे पहले कुछ पता ही नहीं था मेरे को। हैप्पीनेस क्या है, ग्रेटिट्यूड क्या है, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि मतलब आपको एक थैंक्स देने से इतना कुछ मिल जाता है। कल जब मैं दिल्ली से जोधपुर आ रही थी, बहुत तेज बारिश थी। तो जब मैं घर से निकली तो मैंने लगा कि इतने मैं ट्रैफिक में फंस जाऊंगी, मैं कैसे एयरपोर्ट पहुंचूंगी। मैंने दिल से ऐसे थैंक यू रोड, थैंक यू एज रेड लाइट बोलना शुरू किया। मेरे को थ्रू आउट द वे कहीं पे भी रेड लाइट नहीं मिली। एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते सारी फ्लाइटें डिले हो रही थी। मैंने मन में थैंक्स देना शुरू किया। मैं जब तक एयरपोर्ट पहुंची बारिश बंद हो गई, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा देखो थैंक यू में कितना मैजिक है। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट मतलब थ्रू आउट द डे होते रहते हैं। आई एम सो हैप्पी कि मतलब मैं अपने दिल से प्राची को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इससे Thank you, पहले Prachi. और तुम सेल्फलेस इतना एफर्ट डालते हो सबके लिए। थैंक यू प्राची, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। आई एम सो थैंकफुल। Thank you, Tushaji. Thank you for your love. Thank you so much. So I think we all are here because हम कुछ ढूंढते हैं। मुझे भी नहीं पता था, मैंने जर्नी शुरू करी, शायद मुझे भी ढूंढनी थी। एंड इस जर्नी में मैं आपको बता दूं, इट्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल वन, बट थोड़ा काम करना पड़ेगा। There are recorded sessions on YouTube which we've run with my teachers. A lot of my teachers have empowered me. वो आपके पास भी आने वाले हैं। कितना इससे बाहर आपको blossom करना है, like a pearl, how much you want to shine depends upon how much you are giving in. अगर आप दे रहे हैं तो आपको मिल रहा है, अगर आप नहीं अपने आप में इन्वेस्ट करें तो मिलेगा तो जरूर, पर उतना रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. So completely depends upon you. Alona, do you want to share something? So Alona is somebody who's been with me in Sangha 1, 2, and 3. So I don't know what to talk about her. Selflessly, this girl gives all the time. So Rahul sir, yeah, we have 5 minutes, so 6:21 we want to close. So Alona can share her light. Alona, thank you firstly for being you. मैंने कल भी कहा था और आज भी बोल रही हूँ, तुम हो तो मेरा I'm never alone. I know you have my back. I haven't met you as such before the Sangha. मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, अलोना का 40th बर्थडे आया था पैंडेमिक में, एंड किसको बुलाया इसने अपने बर्थडे पे? सिर्फ संघा 1 की मित्र को। बड़ी सी फैमिली है इसकी, बड़े सा फ्रेंड सर्कल है, बट किसको बुलाया बर्थडे में उदयपुर में? संघा 1 को। एंड सबके फोन आए मेरे पास, 11 संघा मिले, हम संघा मित्र बोलते हैं मेंबर्स को, बिकॉज आई बिलीव इन बुद्धिज्म। अलोना ने 11 पीपल, सबके मुझे फोन आए इंडिपेंडेंटली, और मैंने सरप्राइज दिया टू अलोना ऑन हर बर्थडे। 1.25 साल के बाद पहली फ्लाइट ली जस्ट फॉर हर, बिकॉज दिस गर्ल इज सुपर स्पेशल. सो यस अलोना, प्लीज शेयर योर लाइट. Thank you so much. And it's not just for me. You are also so much special for every one of us. It was like amazing experience with you for these 8 months, I will say. 1-to-1 days, Yeah. first Sangha, 1-to-1 days, second Sangha. And for sure, we are continuing this journey. Because it's just amazing. It's not just about learning particular things. It's about new books, new people, meeting new friends, making them like, I'll tell you everyone that in first Sangha, we all came so close to each other. We never had even thought that we'll meet so many new people or we'll be some so close to each other. Even Prachi. Prachi was like, I was just introduced, like, by my sister-in-law to her in the evening sessions. Then my husband joined in for the morning sessions, and I was just like, I was in two minds whether to join in or whether to not join in. I started sitting with him, and just I got so fascinated by it that I want to do it, and it has brought so many changes in our life, so many changes. It's just amazing. This journey helps you a lot. Everyone should do it for sure. Thank you Thank so you. much, Prachi, for everything. Thank you, my loved one. So Sonakshi Mohindra, आप बोल रहे हैं, I think I manifested this journey into my life, exactly what I was looking for. So thank you for realizing that you were looking for this, and believe me, it's going to be very enriching. And I'm not asking to register now. आपको जब comfortable हो आप register करिएगा. It's for a good cause, but and it's for your journey. And Meenakshi Arya is saying, I feel like this journey is about growing. 100% Meenakshi, you got it right. It's about growing.
growing every part of you. हमारे जो अंदर डर होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं. जितेंद्र सरावगी जी is logged in here and he had a beautiful sharing. maybe उन्हीं की जुबान से सुनते हैं. So let's have Jitendra Saraogi ji share his light. He's again with me in the BCI family and that's how he came. And Jitendra ji ने एक बहुत सुंदर चीज शेयर करी. ये एक silent killer है. He doesn't talk at all. अपने एक्शन से इनकी बातें सुनने में आती हैं. So Rahul sir, let's have Jitendra ji on the spotlight. So Jitendra Kumar ji is somebody we look up to, and he's led by example. Life में changes, इतने सुंदर changes लाए, which is very beautiful. Rahul sir, I think he's unable to unmute him today. I'm not the co-host, so I'm not able to unmute him either. Tomorrow, I hopefully will be in a better place. Can you raise your hand, Jitendra ji? It will be easier for him to spotlight you. Yeah. Yes, Now, please. okay. I'm audible. Good morning. Very audible. Yeah. Thank you. Yeah. Good morning to all. I have done my LTS2 for 121 days, and again, I'm in for 121 days for sure. Really? Yeah, Okay, for welcome sure. aboard. No doubt at all. No doubt at all. Welcome aboard. Yeah. I had done BCA course with Prachi, and have heard and done magic book also, and I learned about the manifestation from Rahul sir, but actually followed it and experienced it with the journey along with Prachi in the LTS2. So I benefited a lot. I gained a lot. So I'm continuing this journey to grow more and more. Jitendra, do you think you want to share about your writing जो आपने अपना intention लिखा था family के बारे में और कैसे वो पूरा हुआ? You think? जी. हाँ. हमारी एक जॉइंट फैमिली बिजनेस है पुराना 10-12 साल से 15 साल हो गए, more than 15 years. और लास्ट 3-4 साल से एक डिस्प्यूट, कुछ पॉइंट को लेके डिस्प्यूट हो गया था हमारा ब्रदर्स में. कुछ मतलब डिफरेंसेस आ गए थे थॉट्स में. उसके कारण डिफरेंस वो बढ़ रहा था, कुछ दूरियां बढ़ रही थी. तो 2-3 साल से कम्युनिकेशन एकदम बंद हो गया था. एकदम इस मोड पे था कि अब इसको हम लोग को सेपरेट, मतलब सेपरेशन का उस पॉइंट पे आ गया था वो सब. लेकिन मैनिफेस्टेशन से समझिए या ग्रेटिट्यूड से, अफर्मेशन से मैंने एक ड्रीम मैनिफेस्ट किया था, एक मून को एज पर प्राचीज टीचिंग, और उसको सरेंडर किया था कि हमारा ये अलाइनमेंट वापस हो जाए विथ डिवाइन गाइडेंस. और ये महीना भर के अंदर ये एक जादू की तरह, एक सपने की तरह ये हम लोगों के बीच अलाइनमेंट हो गया, जिसको किसी ने सोचा नहीं था कि ये पॉसिबल भी है क्या. तो हम लोग वापस अलाइन हो गए और वापस अब एकदम पहले के जैसे. हमारे में पहले बहुत बॉन्डिंग थी, बिफोर दिस डिफरेंसेस हमारे में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी. लेकिन ये 3-4 साल का पीरियड कुछ टाइम खराब था, कुछ भी समझिए, एक डिफरेंसेस आ गया था, जो इस मैनिफेस्टेशन और इस मेरा LTS2 करने से ये मेरा सारा अलाइनमेंट दूर हो गया. और अब हम लोग पहले की तरह वापस एक साथ हैं, पहले जैसी बॉन्डिंग वापस आ गई है. तो ये एक तरह का बहुत बड़ा एक चीज अचीव हुआ है, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ और सबके साथ शेयर करता हूँ. Thank you, Jitendra ji, for sharing your light. आपने अपनी लाइफ में इतने मैजिक लाए बिकॉज आप डिलीजेंटली कर रहे थे जो आपने सीखा, सिर्फ सुना ही नहीं, इम्प्लीमेंट किया. सो उन सब के लिए मैं बोलना चाहूंगी जो यहाँ आ रहे हैं थिंकिंग कि सिर्फ यहाँ सुन लो सत्संग की तरह, प्रवचन की तरह, नो, नॉट हैपनिंग. प्लीज डोंट कम. काम करना पड़ेगा. If you're working with me, you have to work. You can't not work. So be ready to work and काम करने से ही रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलते. चलिए, let's just 2 minutes of gratitude. Let's close our eyes. अपनी आंखें बंद करते हैं. Take a deep breath in. And let's say thank you. जब exhale करते हैं तो thank you. Once more, take a deep breath in with thank you. And exhale and say thank you again. Thank you. Once more, take a deep breath in. And exhale with a thank you. Thank you. Thank you to the universe for bringing all of us together on this beautiful Sunday morning. It's a soulful Sunday.
We've come together to grow in life, to help each other grow in their life journey. We're all in a soul journey. We're going to discover our mind becoming sharper, our body becoming healthier, our soul finding its purpose. We're entering the world of spirituality, knowing we have abundance in health, wealth, and life. And so it is. With these beautiful intention and blessings, today let's bless each other with love, light, and abundance. So let's open our hands for blessing. Let's bless each other. Dr. Kamakshi, Shweta, Shruchi Madan, Neha, your mother, your partner, Richa, Jitendra ji, Prakash, Jikisha, Meenakshi Arya, Nikita, Ritu, Alona, Usha ji, Seema, Niriksha, Disha, Supriya, Rahul sir, Saloni, Nidhi, Neha, Peena, Swati, Shami and Ankur, Akshay, Sonakshi, Suruchi, Anju, Ajay, Surendra Jain, Bhavi ji, Reena Tyagi, Shikal Diani, and to everyone जिनकी कैमरा जिनके मोबाइल्स बंद हैं और उनके नाम उन्होंने अपने vivo लिखा हुआ है. So it will be nicer if you have names. I can't make out with the mobile model. So lots of love, light and abundance to every one of you. अगर कुछ मिला है आपको आज, so please come back tomorrow. Same time, same place at the power of 5. Take care until then. Lots of love, light and abundance. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Rahul sir, for this beautiful morning session. Thank you, dear Shweta. Thank you, dear Prakash, Jigisha, Jitendra ji, Niriksha, Alona, and Usha ji for sharing your light. Thank you so much. God bless us all. Let's see each other tomorrow at 5. Thank you, thank you, thank you. Have a soulful Sunday, a blessed Sunday with your families. Lots of love.